Hello, curious minds. My name is Abrar. Welcome to my channel, Abrar Mustafa. Do you ever wonder where does your money go at the end of the month? You have earned a salary and income, but you do not understand why I am not able to manage my personal finances. At the end of the month, why I do not have any savings, why I do not have any money left. If that is the case, in this video, we shall discuss about one age-old practice with the help of which you can start managing your personal finances today. This is especially important if you are a beginner. सबसे पहली बात, फ्रेंड्स, बजट होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल है. Budget is just a record of your income and your expenses. It shows you where the money came from and especially where did it go. ये आपका पैसा जो है आखिर गया कहाँ? That's what a budget shows. And it's said that if something is measurable, that thing is manageable. So if you can measure your money, where did it go every month, you can manage your money. Know your incomes and your expenses. This is the first step of budget. You just make a column, pick up a pen and a paper and write down the income and the expenses. Second thing is to categorize your expenses. यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको पहली कैटेगरी बनाए. फॉर एग्जाम्पल योर रेंट, द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, द वाटर बिल्स, ग्रोसरीज. खाना तो खाना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो categorize your expenses of the entire month. This may include your bills, money for your food, money for your rent. It can include travel expenses, fuel expenses, then leisure, entertainment. आप जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर कितना पैसा आप एलोकेट करेंगे. So you will first of all make these categories. Categories बनाने के बाद what you will do is, जैसे बजट बनता है ना एक कंट्री का, और फिर वो अलग अलग चीज़ों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हेल्थ केयर को इतना, डिफेंस को इतना, जॉब्स के लिए इतना. एक अलग चीज़ है कि जॉब्स के लिए कितना मिलता है. खैर, हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस पे आते हैं. नाउ द स्टेप इज टू एलोकेट मनी. अगर आप 10,000 कमाते हैं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, उसका एक हिस्सा आप ग्रोसरीज के लिए रखिए, जो आपको लगता है कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस इतना होगा ऑन ग्रोसरीज. एंड सो यू एलोकेट योर मनी to the most important categories first and then the least important categories. Allocation of money. जब आपने पैसे को allocate कर दिया, उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे. जब भी आप महीने में जाके ग्रोसरीज खरीदेंगे, you will make an entry in your budget on your paper and तमाम कैटेगरीज में कितना पैसा गया ये आप पूरे महीने रिकॉर्ड करते जाएंगे. जब आपने ये पैसा रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्च किया, इसके बाद आप इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको ट्रैक करेंगे, आप इवेलुएट करेंगे कि ग्रोसरीज के लिए तो मैंने बजट रखा था 10,000 रुपये, लेकिन अभी तो 12,000 रुपये खर्च हो गया. मैंने एंटरटेनमेंट पर्पस, लेजर्स, मूवीज, नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए 1,000 रुपये रखा था, लेकिन यहाँ तो 2,000 चला गया है. तो यहाँ पे दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज एडजस्टमेंट एंड कटिंग बैक if there is a deviation. अगर आपने बजट में पहले 10,000 रुपए बना लिए हैं, but now there is some additional money has gone into a particular category, what you will do is you will cut back. The next month you will cut back, you will make adjustments and अगले महीने का बजट आप accordingly बनाएंगे. क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ गया कि मैंने तो कैटेगरीज ये बनाई थी और उनके लिए इतना पैसा एलोकेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा इस कैटेगरी में पैसा जो है वो ज़्यादा स्पेंड हो गया, एंड विद द रिजल्ट आई नीड टू कट बैक ऑन दीज पर्टिकुलर बैंड्स, ऑन दीज पर्टिकुलर कैटेगरीज. दिस इज व्हाट अ बजट डज. इट शोज यू कि आपका पैसा ज़्यादा कहाँ पे चला गया, कौन सा पैसा कितना कहाँ चला गया और कहाँ पे मुझे कट बैक करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है. एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द आइडिया कि मैं अगले महीने का बजट किस तरह से बना लूँ. And now the tailpiece in the video, the takeaways of today's video are, आपने बजट बना लिया, आपने समझ लिया कि मेरा बजट, मेरा पैसा कहाँ गया, कहाँ चला जाता है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट्स बनानी है. First of all, you have to stick to your budget. A budget only shows you the way, but it does not actually save money for you. It only shows you how you can save money by cutting back, by adjusting in the different categories.
Number second, budget is a habit. It does not happen overnight. You have to stick to your budget for 3 months, 4 months, and then gradually you will find a way. And budget is for all income groups. ऐसा नहीं है कि मैं तो भाई सिर्फ 10,000 कमाता हूँ, क्या बजट बना लूँ? लो, you also have to make a budget. ये 1 लाख रुपए वाले बंदे के लिए भी बजट बनाना ज़रूरी है, एंड 10,000 रुपए वाले बंदे के लिए भी जो है बजट बनाना ज़रूरी है. एक और चीज़ जो मैं ये एक टेक अवे, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द वीडियो बट स्टिल आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस टू यू. जब आप बजट बनाएंगे तो उस बजट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑप्शन ज़रूर रखिए. यू फर्स्ट हैव टू इन्वेस्ट and save and put into your investments like mutual funds, FDs, RDs, whatever your investment option is. And then what is left, you have to allocate it to different categories and spend the money. So investment first, saving first, expenses later. I hope आपके इस आज के वीडियो में आपको एक अच्छा कंटेंट मिला होगा. If that is the case, share it with your friends. Subscribe to my channel Abrar Mustafa. Comment, give me feedback. And that's all. So let's wrap up and reflect. Abrar Mustafa signing off.